बच्चे अपना नेक्स्ट टॉपिक है एसिड बेस बिहेवियर ऑफ ज्यूटराइन। ਅਸੀਂ ऑलरेडी गल कर चुके हैं कि अमाइनो एसिड्स की जो पीके वैल्यूज़ है या पीके बी वैल्यूज़ है दे आर क्वाइट लो। और अगर ਅਸੀਂ अमाइनो एसिड स्ट्रक्चर इस तरह लिखिए जिससे से ਅਸੀਂ डाईपोलर स्ट्रक्चर नहीं लिख रहे, सिंपल अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिक एसिड ग्रुप लिख रहे हैं, तो कार्बोक्सिक एसिड्स कंपाउंड्स जो पीके वैल्यूज़ होंगे ने दे आर नॉर्मली इन द रेंज ऑफ 4 to 5। इसी तरह अमाइनो कंपाउंड्स अमीन्स की अगर ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀਕੇ ਵੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵੀ 4 to 5 ਜਾਂ 3 to 5 ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਐਕਸਪਲੇਨਡ ਔਨ ਦਿਸ ਬੇਸਿਸ that when we are writing deuteriene structure of these amino acids, then there is no proton on the carboxylic acid but it is donated already to amino group. So it is now substituted ammonium part which is acting as proton donor. So it is the reason for the acidic behavior of these amino acids, not the carboxylic acid. So it is acting as acid center, whereas it is the carboxylate ion which is now in a position to accept proton or proton acceptor. So this is base center. So as expected, amino group is not acting as a base, it is the carboxylate ion which is acting as a base. So when these amino acids or the deuteriene is dissolved in water, because it has both sides, basic and acidic side, and water is also acting as amphoteric solvent, it can also act as acid and base. So ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਐਸਿਡਿਕ ਸਟਰੈਂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਮੋਨੀਅਮ ਪਾਰਟ ਜੋ ਹੈ ਇਟ ਵਿਲ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਐਸਿਡ, ਇਟ ਵਿਲ ਡੋਨੇਟ ਦ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਟੂ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਵਿਲ ਐਕਸੈਪਟ ਦ ਪ੍ਰੋਟੋਨ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ੂਟਰਾइन ਜੋ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਕਟਿੰਗ ਐਜ਼ ਅ ਐਸਿਡ। ਸੋ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਕੌਨਜੂਗੇਟ बेस बन जाएगा। और अगर असी के ए वैल्यू लिखिए इस रिएक्शन की, तो के ए वैल्यू इज़ रेशो ऑफ कॉन्सनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द कॉन्सनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इतने असी वाटर की कॉन्सनट्रेशन जो है उसको इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि वाटर की जिन्नी वाटर असी एज अ सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ टेकन इन लार्ज एक्सैस। जिन्नी क अमाउंट इस नाल कंज्यूम हो रही है उसकी ओवरऑल कॉन्सनट्रेशन से ज़्यादा इफेक्ट नहीं पै रहा। सो अगर असी उसदे विच हुण एग्जाम्पल लीए ग्लाइसिन दी, इन विच आर ग्रुप इज़ एच, उसकी के बी वैल्यू इज़ 2.5 इंटू 10⁻12 एंड के ए वैल्यू इज़ 1.6 इंटू 10⁻10. So these are the experimental values, and we know in aqueous solution when we dissolve an acid, then during the reaction its conjugate base is formed, and in aqueous solution the Ka value of acid and Kb value of its conjugate base at room temperature, its product is 10 raised power minus 14, or we can write 1 into 10 raised power minus 14. So if you apply this part to glycine and Ka value is 1.6 10 raised power minus 10, so for glycine the value is known to us. So is the conjugate base है तो उसकी जो के बी वैल्यू आएगी तो की आएगी, सो के बी वैल्यू ऑफ द कॉन्जुगेट बेस ऑफ ग्लाइसिन is 1 into 10 power minus 14 divided by this Ka value which is 1.6 10 power minus 10. So this value comes out to be 6.3 into 10 power minus 5. So this is the Kb value of conjugate base जिसदे विच NH2 ग्रुप फ्री है। सो ये वैल्यू आ रही है अमाइनो ग्रुप की तरह आ रही है, और सानू पता है कि वैल्यू जो आएगी पी के बी वैल्यू अगर अस इसका माइनस लॉग लीए, सो इट विल बी लेस दैन 5। सो 4 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी जो कि कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है ऑफ द फ्री अमाइनो ग्रुप। और उसी तरह अगर असी गल करिए के ए वैल्यू की, तो उसके लिए भी असी सिमिलर इक्वेशन लिख सकते हैं। So this is the, if R is H, so again this is glycine, water से ऐड कर रहे हैं। now अगर इस इज़ द बेसिक करेक्टर शो करना है, so it is acting as a base and water will definitely act as acid, it will donate proton, and so now it is giving proton to carboxylate ion जिसਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ फ्री carboxylic acid group जनरेट हो जाएगा। और उसी तरह ग्लाइसिन ਦੇ ਲਈ we know जो के बी वैल्यू है दैट इज़ 2.5 इंटू 10 raised power minus 12. So again Ka into Kb we know it is
10⁻14 in water और Kb वैल्यू सानू पता है तो ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ Ka वैल्यू निकाल सकते हैं इज ए कॉन्जुगेट एसिड दी सो दिस इज 1 × 10⁻14 डिवाइड बाई 2.5 × 10⁻12 so the value comes out to be nearly 4 × 10⁻³ and pK value is less than 3 सो इसਦੇ ਵਿੱਚ जो Ka वैल्यू है वो ਅਸੀਂ देख रहे हैं कार्बोक्सिक एसिड ग्रुप जनरेट हो रहा है कॉन्जुगेट दिस इज बेस सो दिस इज कॉन्जुगेट एसिड सो क्योंकि कॉन्जुगेट एसिड ਵਿੱਚ कार्बोक्सिलिक एसिड है और ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ कार्बोक्सिक एसिड ਜਿਹੜੀ Ka ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂ Pk ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 3 ਔਰ 4 ਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਜੋ Pka ਵੈਲਿਊ ਜਾਂ Pkb ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ कार्बोक्सिलिक एसिड ਜਾਂ ਫ੍ਰੀ ਅਮਾਈਨੋ ਗਰੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦੇ ਆਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ substituted ammonium part and carboxylate ion which identifies or which verifies the zwitterion structure of the alpha amino acids. Now we have to study the effect of pH value on the structure of alpha amino acids. इसका मतलब की है ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਕਿ ਉਹ ਐਸਿਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੌਨਜੂਗੇਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जनरेट होएगा ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਗਰੁੱਪ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨਲੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ that depends upon the pH value of the solution ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ pH ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਕਰ ਦਈਏ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਐਸਿਡਿਕ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ these amino acids which exist in the form of zwitterine it will take acid proton or proton is given to the carboxylate ion and it exists in this form क्योंकि ये strong acid है so it will displace weak acid और सारे कोल की बन जाएगी फर्स्ट स्ट्रक्चर ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੈਟਾਇਨਿਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ और दूसरी एक्सट्रीम if we make the solution highly alkaline pH value greater than 12 ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ zwitterine ਹੈ it will react with the base added and base will take or accept proton so it is only substituted ammonium part which will donate proton so ये साढ़े कोल strong base है so strong base will take proton and it will displace weak base and weak base is in the anionic form and water is formed along the main product so it means अगर solution ਦਾ pH value ਇਹ ਦੋ extremes ਦੇ in between है then ਕਿਹੜੀ structure net exist ਕਰੇਗੀ is it first or second it actually depends upon the pH value of the solution so we can write the equilibria so this is zwitterine structure if we are adding acid so सारे को cationic form जो है वो exist करेगी let us denote it as first structure it is second structure और अगर reverse reaction show करना है we have to make the solution alkaline और अगर असी solution ਨੂੰ alkaline करते हैं ਤਾਂ base will take proton from NH3 positive तो साढ़े को ये थर्ड स्ट्रक्चर बन जाएगी जी की एनाइन है सो दिस इज कैटाइन एंड दिस इज एनाइन और अगर रिएक्शन से रिवर्स डायरेक्शन विच करना है वी हैव टू ऐड एसिड और वी हैव टू डिक्रीज द पीएच सो इट मीन्स इफ वी मेक द सोल्यूशन अल्कलाइन
ए स्ट्रक्चर ज़्यादा एग्जिस्ट करेगी, और इफ़ यू मेक द सोल्यूशन एसिडिक तो ए वाली स्ट्रक्चर ज़्यादा एग्जिस्ट करेगी. सो एट ए पर्टिकुलर pH वैल्यू ਕਿਹੜੀ ਸਟਰਕਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੋਨੋਂ ਵੇਰਿੰਗ ਅਮਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਨਗੀਆਂ. ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਅਮਾਈਨੋ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰਬੋਕਸਿਕ ਐਸਿਡ ਗਰੁੱਪ ਹੈ. ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਏਜੈਂਟਸ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੈਟ ਅਸ ਸੇ ਕਿ ਕਾਰਬੋਕਸਿਕ ਐਸਿਡ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਲਕੋਹਲ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਐਸਟਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ PCl3 ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ acid chloride ਬਣ ਜਾਏਗਾ. So if we are adding any reagent which is characteristic of carboxylic acid reaction, the equilibrium will shift in this direction. It will consumed during the reaction, and equilibrium will shift towards this, it will again consumed. So the complete or the whole amount of deuterium will behave as if it is having free carboxylic acid group. Similarly, if we are adding a reagent which can react with amino group, the third structure will react with that structure and get consumed, and the equilibrium will shift in the forward direction to give more of third structure, and again it is consumed with the reagent, and in this way the whole deuterium amount is consumed, showing that it is mainly consisting of NH2 structure. So it depend ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ reagent ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ.